ओके जी। ये हेलो, बात अस्सलाम नहीं करी वालेकुम ना, मुझे तो एवरीवन। पता ही नहीं है भाई सिस्टम। मैं तो ऑनलाइन टिकट दिखाते थे वो भी कि मैं मुझे तो वो भी नहीं पता। Okay ji. I hope the panelists are here. Two or three are remaining. So let's start off with the session. The session is all about future of talent acquisition and employee retention. So first of all, we'll have our panelists introduced, and then we'll go forward towards the questions of the topic and the things that will be discussed in the session. But the major topic I have already informed to everyone. Okay, so let's start off with Mr. Arif Hussain Omani. Could you please introduce yourself, sir, so that we can move on to the other panelists one by one? Your audio is mute, so could you please? Yes. Sure. Ji. Thank you, Vanessa, for inviting me. I'm very happy to be part of this esteemed panel. I'm sure we will have a very fruitful and interesting discussion. I manage HR for Smile Industries, for last 4 years. Before that, I've worked for large local and multinational companies such as Siemens, ICI, and HBL. And I have hands-on experience of heading recruitment for HBL, which was a large bank, and it was very complex. So I'm sure I'll be able to, contribute immense value to the discussion. So thank you very much. Okay, sure. Now, Mr. Mustafa Bilal Khwaja, could you please introduce yourself, sir? Your audio is on a mute. Could you please? Okay, Assalamu alaikum. This is Mustafa, and just you people very much know about it, but my little introduction, I'm associated with HR profession since last 20 years, and by education, I have organizational psychologist. I've done specialization in HRM. Currently, I'm working with the Diwan Cement, heading the HR. Before that, I used to work with Young's Food in FMCG and Mako Habib, and insurance in NGI or the Brooks Pharmaceuticals. So this is the brief introduction from myself. Please. Thank you so much. Hi, Romana. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Thank you. Okay, Romana, could you please introduce yourself to the audiences? Okay, my name is Dr. Mana Isaz, and I'm working in Bayer as an HR business partner. I'm working in the HR role for the last 6 years. Before that, I have an industry experience of total 15 years. I have worked in marketing, sales, graduated as a medical personnel. So overall, I have got a very diverse experience, and I'm currently really enjoying my role in HR. Okay, that's great. Okay, now we have Hira. Hira, could you please introduce yourself? First of all, assalamu alaikum and welcome to all. And thanks. I'm here, and currently I'm completed my MBA and MPhil in HRM. Now I'm working as a co-host with Ghulam Mustafa sir. That's all. Okay. Okay. So we have an introduction from every one of you. There's one person who is who has not joined us yet. Ghulam Mustafa Sahab is also not here right now. They'll be joining us in a bit. Shehbaz Ali Beg is also joining us. He has 20 years of experience in a leadership role and talent acquisition role. So and he's currently giving a training to some EMEA. He'll be joining us in 20 minutes time, and I think we should be starting with the topic. So first question of mine is what is currently driving the TA function in the organization, and what are the hindrances that the organizations are facing for this particular function? So starting off with the uh, with Mustafa Saab, if you can please. Okay. Thank you, Maniza. At present, if we see overall the situation, especially after COVID-19, this is new for all, overall the entire world. And we have seen the dramatic and the different work environment during the pandemic or a little bit post-pandemic since we have opened and we are fully operation right now in the different sectors. So, in fact, it impacts more on the employers and employee as well.
with respect to the psychology, with respect to the work practices. And the problem is जो तीन मेजर प्रॉब्लम जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू दी हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर इज जो हमें नजर आ रही हैं वो ये है कि जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अभी भी चल रहा है खासतौर पे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू में तो अभी भी कई जगहों पर है तो दैट्स यू हैव टू figure out or to mentalize the specific We have lost you. I think his line dropped. I think he's Yes. Yeah. So I can continue on that because I've got a very good experience of talent acquisition in these last couple of months. What happened basically, my organization was going into integration, and I was basically responsible to set up an entire division. And during this time of COVID, what basically happened was that organization was not as equipped, or even the nations were not exactly equipped to be virtual. So, but I think it gave. If I share my experience, it gave me ample of time to work upon how to acquire the best talent from the industry. Yes, difficult times there, and yes, there were some layoffs also which happened from different organizations. So talent pool was there, but then how are we basically contacting them? आपको पता है कि talent acquisition के लिए we are either that has been previously happening also, that we either contact them on phone or on LinkedIn, or there are different email messages going out to them. We are collecting the data from net also. That is easy. That was the easy part. That wasn't the difficult part. But then when we came into the process of interviewing these candidates, calling them up, and then these people were not able to travel, these people were not able to have a face-to-face interview with us. So that is the time we took advantage of net a lot. I think these smartphones helped a lot. Most of the people, if I talk about sales, were not even having laptops. So these smartphones were the way or means through which we conducted a lot of interviews. Even after the interviews, those people who were finalized, electronic signatures were being used a lot on the forms when they were filling them. And along with that, we also worked upon onboarding systems. How can we make that material which we already had in the organization, we could module it in a manner where we can make onboarding smarter and attractive and informative for the candidates whom we have hired. So all this process, yes, was done virtually. And of course, virtual work was also happening, work from home was going on. So managers were taken on board, and we had to make changes in the JDs, or basically the assignments which we gave to the candidates were designed in a manner so they can basically be active part of the team during the time of COVID. So this is a small example which I shared, which this difficult time or COVID time made us do. And I think we are very successful in generating a lot of forms which were previously handled manually. Now they are all online. Interviews are online. Onboarding systems are online. Material which has been dispatched to them has all been done online, and we have those team members along with us and working very efficiently. You were saying something, Mustafa Bilal, so when yeah, I'm sorry, it was some problem. I disconnected. Yeah. So with respect to your hindrance, yes, definitely. With respect to the big plants point of view, we have a residence, we have a residence issue, we have a mobility issue. With respect to the logistic issue to mobile from staff to the with respect to the COVID safety point of view, from city to the outside the Karachi where our plants exist.
So such kind of problems we are facing right now, and we have managed residents outside the inside the plants for staff, specific teams, and we are working at this moment 20% or 15% staff strength instead of 80%. Instead, okay, plants has started to operation. So this is one of the hindrance right now with respect to the mobility, with respect to the talent point of view as well, because due to which uh, we are not going to hire or hunt the new talent uh, so far. So कोविड हैज ऑलमोस्ट डिक्रीज और द ओवरऑल दी जो उसका प्रॉब्लम था वो काफी हद तक कम हुआ या दैट्स द कॉन्फिडेंस लेवल हैज इंक्रीज्ड among the people and the nation. But so far, this point of view, because we have a big plants outside the city and they are not fully operated. Yeah, if they are fully operated, so working with the very less strength, so this is the hindrance to hire, to move, to hunt the new talent for the positions. So this was the point of view from the big plants which are located and outside the remote areas, the city. Ji, please. Okay. Okay. Okay, Ji. RF sense up. What are you? What is your take on that? Your audio is mute. Will you please unmute it? I think as Romana appropriately pointed out that there were challenges during the time of COVID for the industry as a whole and for the talent acquisition teams also. But I think हमारे FMCG में थोड़ा सा different experience रहा because we were as essential industry and there's obviously a lot of demand for our products. So generally हम नए talent की तलाश में जारी रहे और अब जब हम नॉर्मेलेंसी की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास एक और चैलेंज खड़ा हो गया है जो रिक्रूटमेंट का फंक्शन है ना वो अपॉर्चुनिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू अ पर्सन्स नेटवर्क सो जनरली जब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया और जनरली दे वर हुक्ड ऑन टू लिंक्डइन and they were connecting and they were networking, so generally a lot of people are now finding opportunities within our organization because they networked a lot during the last 3-4 months, and generally the demand in FMCG is coming back, and most companies, because of lower interest rates and the incentive by the government, are going towards growth and expansion. So मुझे इतनी ब्लीक पिक्चर नजर नहीं आती है. मुझे लगता ये है कि आने वाले 3-4 महीनों में आप देखेंगे कि जो टैलेंट एक्विजिशन की जो टीम्स हैं उनकी जिंदगी और मुश्किल होने वाली है बिकॉज उनके पास डिमांड होगी और सप्लाई इतने लोगों की नहीं होगी. सो देयर थिंग्स विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली. आई बीन ऑलवेज एन ऑप्टिमिस्ट. मैं कोविड के शुरू के पीरियड से लोगों को यही कहता था कि वी आर अ कंट्री ऑफ 220 million people, so generally the demand is always going to be there, and obviously when the demand is there और वो जब 4 महीने का एक स्टॉक गैप हुआ है तो वो डिमांड एक साथ वापस आएगी. And I'm very very positive. So the challenge for talent acquisition team going forward would be to identify the right talent जो कि इस तरह के क्राइसिस में और इस तरह के चैलेंजेस में अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर सके. और इसका जो दूसरा लेग है वो आई एम श्योर आप आगे सवाल पूछेंगी कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्चुअली ये तो अब कोविड तो इज हिस्ट्री नाउ. आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव एंड होपफुल कि अब हम पोस्ट कोविड में हैं. वी आर इन नॉर्मेलेंसी मोड नाउ. हमारी कंपनी में वी वर द फर्स्ट वन टू गो ऑन अ वर्क फ्रॉम होम मॉडल in the month of March, but we are now completely fully back, and हमारे पास we are fully operational. I think for us it is absolutely normal. So I personally believe कि हमारी जो डिस्कशन है और जो मेरा आगे मैं जहाँ वैल्यू ऐड करना चाहूँगा will be more at a macro level, more at a broad scale के ऊपर क्या रिक्रूटमेंट के फ्यूचर में जो आपका जो टॉपिक है. So that's for the later part of the discussion. But I believe कि जो challenges थे talent acquisition को COVID के अंदर, I think they're over now, and I think we have a brighter future and a brighter tomorrow to look towards. Okay, that's great. Okay, Hira, would you like to contribute something? मिस मनीषा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगी, माय क्वेश्चन इज टू यू, कि जैसे अभी हिंड्रेस काफ़ी ज़्यादा आई है कि काफ़ी कंपनीज ने ले ऑफ किया है ड्यू टू कोविड की वजह से, तो आप नेक्स्ट फ्यूचर में क्या देखती हैं कि जो न्यू टैलेंट है वो क्या हम उसको आगे इस हद तक लेके जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता. जो न्यू टैलेंट होता है, एक्सपीरियंस लोगों के पास, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड है, मतलब 8 to 9 years जो वर्किंग जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो चले हैं, हर एक उनके पास स्किल्स होती हैं, लेकिन जो न्यू टैलेंट है उनका क्या बनेगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मिस मनीषा?
Well, I believe that opportunities post-COVID, there are a lot of opportunities in the market right now. When I'm going through the forums and for example, आप LinkedIn पे भी देख रहे होते हैं, there are a lot of opportunities coming in, especially for the junior level staff. What I see from the forums and the job postings, कि जी mostly जो है वो senior level positions are little less than the opportunities which are for the junior staff जिनको आप develop करते हैं with the organizations and they grow with the organizations. People are also, there are opportunities for those people as well in the market. What do you have to say, Bilal, about this? Is it this? मैं इसमें एक एक्सपीरियंस हाँ, sure. एक मैं आप मुझसे पूछ रही जी हैं जी जी तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि रिसेंटली अ गाय मेट मी ही इज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एनईडी बट ही बिलोंग्स टू नवाब शाह तो उसने कहा कि जैसे कोविड हुआ तो उसके प्लांट्स जो भी थे या जनरल ऑर्गेनाइजेशन ने उनको वर्क फ्रॉम होम कर दिया या तो जाहिर सी बात है इंजीनियर तो घर से वर्क फ्रॉम होम उसका नहीं कर सकता क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में उसका काम होता है सो व्हाट ही हैज डन ही मेड अ पेज उसने ऑनलाइन पेज बनाया और उसने नवाब शाह से मैंगो ऑनलाइन सप्लाई करना शुरू किया और अब उसने ये बताया कि उसने 5 मंथ्स में मोर देन सैलरी जो उसको मिल रही थी एक इंजीनियर की वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है सो दैट ही हैज कन्वर्टेड हिज माइंडसेट फ्रॉम जॉब टू द एंटरप्रेन्योरशिप उसकी रिसोर्सेज थी नवाब शाह में मैंगो की एंड दैट ही हैज स्टार्टेड टू सप्लाई ऑनलाइन मैंगोज तो उसने कहा कि लोग वैसे ही घर में बहुत थे और ऑनलाइन का बहुत ज्यादा काम हुआ सो दैट ही गॉट मोर मनी एज कम्पेयर टू हिज सैलरी now he is thinking to move forward to then he consulted me so I suggested him कि now you should continue your work with your job if you want तो तुम ऐसा करो तुम अब नया सीजन आ रहा है मैंगो का तो then you go to the भलवाल and सरगोदा side and to get the मैंगो कह रहा हूँ ऑरेंजेस का so get the oranges from there so he has accepted और वो अब साथ साथ ठीक है जॉब होती है नहीं होती वो ले ऑफ हो गया वो एक अलग मैटर है लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी भी मिली तो कोविड के साथ साथ जहां पर प्रॉब्लम्स भी आए वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी आई वहाँ टेक्नोलॉजी भी आई है और उसने टेक्नोलॉजी ने बहुत सपोर्ट भी किया है द थिंग इज इफ यू आर स्टिल एनर्जेटिक आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं नेवर गिव अप है और आप फोकस हैं तो आप फिर कोई ना कोई राह निकाल देते हैं और फिर हमारा बिलीव है कि अल्लाह ताला भी हमारी मदद करता है प्लीज Mustafa, आरिफ आप कुछ I would like to add to this because ये मैं I've been observing this trend in the top business schools in the last 2-3 years कि जो आपका जो top graduate talent है at LUMS and IBA because we recruit a lot of these young millennials इनका रुझान entrepreneurship की तरफ बहुत बढ़ गया है और I was talking to the HR director at Unilever तो वो भी मुझे ये बता रही थी कि जब हम IBA जाते हैं और जब हम LUMS जाते हैं तो जो top graduates होते हैं वो हमारे पास भी काम करना नहीं चाहते because they have their own entrepreneurial and their own अपना बिजनेस स्टार्ट करने का जो एक स्पिरिट है वो अब ग्रेजुएट टैलेंट में बहुत ज्यादा हो गया है और ये हमारा एक टैलेंट एक्विजिशन के अंदर एक मेजर चैलेंज होगा इन द नेक्स्ट 3-5 years because more and more people are now realizing कि instead of taking the corporate route they should take up a more entrepreneurial route so I think this will make the job of HR professionals, especially talent acquisition professionals, a bit more difficult to get the right people into the company because आपको convince करना पड़ेगा और बहुत सी जगहों पर क्योंकि स्किल लेवल जो कि ऑटोमेशन और या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की वजह से एंसिलरी और रूटीन जॉब्स तो वैसे ही कम होती चली जा रही हैं so you're looking for specialist skill sets outside and when you are actually going there those guys are doing their businesses तो वो जो एक हम क्राउड सोर्सिंग का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं कि आप अपना बिजनेस प्रोपोजिशन या प्रॉब्लम वो आप फेसबुक पे रख दें या कोई कंपटीशन शुरू कर दें और फिर उस पे लोग एक कलेक्टिव आप रिस्पांस कलेक्ट करते हैं एंड दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर रैम्पेंट इन बिग एमएनसीज राइट नाउ कि आप ज्यादा से ज्यादा क्राउड सोर्सिंग की तरफ जाएं और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को थ्रू क्राउड सोर्सिंग आप सॉल्यूशंस की तरफ लेकर आए सो आई थिंक वेरी अप्रोप्रिएटली पॉइंटेड आउट आई मस्ट से So what do you think, Rumana? What is your take on that? Okay, coming specifically to the question which you asked and which Hira also asked that how are we going to grow this talent in the organization now?
सो आई थिंक मेरे ख्याल में हमें अगर ओवरऑल अगर ऑर्गेनाइजेशंस में देखें तो एफएमसीजी की बात कर रहे हैं या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर दे हैड टू कीप ऑन वर्किंग। मुझे लगा कि बहुत सारी इनोवेशंस जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो शायद नेक्स्ट 2 years में होनी थी, वो अभी हो गई। सो आई थिंक जहाँ पर बात आती है हाउ आर वी गोइंग टू इंगेज द टैलेंट एंड हाउ आर वी गोइंग टू मेक देम केपेबल एंड प्रोवाइड देम विद appropriate knowledge and grow them in the organization। e-learning वाला सिस्टम जो है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इस पे फोकस करेंगी और they are going to be less classroom trainings and more virtual trainings which are going to be there, and how we can equip how we can basically transform what was happening before and how इसमें ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को इसलिए भी फोकस ज़्यादा करेंगी कि it is going to decrease the travel cost. It is going to decrease the venue cost. E-learnings, you can keep on renewing the material which is required on the virtual system. So yes, organization will start thinking on investing on these kind of things more now than what was traditionally happening before. So I think that is also one perspective, and I'm coming from one perspective, and Ghulam and Atif talked about another perspective already. So this is my take on this, that in talent acquisition, as I already discussed about onboarding and offboarding, this is also an element which is going to be required in the long run for organizations to equip themselves as fast as they can. Okay. I just add one thing more and to share for information for you people and the audience as well. I met a one university academia recently, and they introduce web development course कराते हैं अपने evening में। पाकिस्तान कराची की लीडिंग फर्म है, यानी इंस्टीट्यूट है। तो वो मुझसे शेयर ये कर रहे थे कि जो उनके वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो जो यंग एक लड़का करता है, he earns 3 lakh rupees per month to conducting courses to train people वेब डेवलपमेंट। अगर मैं 3 लाख रुपीस का एक डिप्लोमा होल्डर या एक बैचलर ग्रेजुएट्स का करूं, so the thing is कि now the market trends is changing and we'll have to pick the right courses, right field with the right skills. And this is our job as well with respect to the HR point of view, with respect to the teaching point of view, teacher point of view, faculty point of view, या एज अ कंसल्टेंट हम जब मार्केट में हैं और हम जो यूथ आ रही है या जो टैलेंट आ रहा है, सो वी कैन गाइड देम, या हमें ऐसा प्लेटफॉर्म इस तरह के सेशंस के थ्रू गाइड ये करना चाहिए फॉर ऑडियंस के लिए कि दैट दे मस्ट हैव टू। हम सब एक ही तरफ चले जा रहे हैं कि मेरे बड़े मैकेनिकल इंजीनियर बने तो मुझे भी वही बनना है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने वही बनना है। नाउ विल हैव टू थिंक अबाउट इट व्हाट मेजर प्रोफेशंस मेक मोर रिजल्ट्स और प्रोडक्टिव इन पाकिस्तान और एज वेल इन द वर्ल्ड एज वेल। इधर वेब डेवलपमेंट का कोर्स हमें ज्यादा प्रोग्रेसिव कर सकता है एज कम्पेयर टू दी वो फील्ड जिनकी पाकिस्तान में या अब आने वाले दिनों में वो फील्ड नहीं है। हम इसमें टाइम के बजाय हम इसमें फोकस करें। तो ये रोल अब कुछ HR साइड एकेडमिया और इन सब का है कि वो यूथ को डायरेक्ट करें, गाइड करें कि वो सही स्किल को पिक करें, इंस्टेड कि वो ऐसी स्किल्स को जिसमें मार्केट में चार्म नहीं है या ग्रोथ नहीं है और वो आकर फिर बटन बन जाए फॉर द रिस्पेक्ट टू और वो फिर प्रॉब्लम हो। तो ये भी एक बड़ी चेंज है या शेयर करने की एग्जांपल कि कई ऐसे लोग जो कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल अर्निंग कर रहे हैं, टू पिक द राइट स्किल एंड द राइट कोर्स ऑफ फील्ड। मैं इसमें मुस्तफा आई विल बिल्ड ऑन व्हाट यू हैव सेड। वन ऑफ द थिंग्स जो कि बड़ा एक ये कहते हैं ना पॉपुलर कल्चर और बज़वर्ड था HR में पिछले 2-3 सालों में, अपस्किलिंग। तो विद द कोविड इट्स नॉट अबाउट अपस्किलिंग एनीमोर, इट्स अबाउट रीस्किलिंग। और आप यूथ की बात कर रहे हैं कि ये जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, इनको सही गाइडेंस और सही स्किल और सही डेवलपमेंट दी जाए। मुझे तो ये लगता है कि जो हमारी वर्कफोर्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमें उनको भी रीट्रेन करना होगा, उनको रीइक्विप करना होगा और उनकी रेडीनेस बढ़ानी होगी फॉर देम टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस अपकमिंग इन द फ्यूचर। और मेरा तो हमेशा से एक डिस्कशन, जब भी मैं CBM गया हूँ, मैं जैबिस गया हूँ, वहाँ के डीन से मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप लिंकेजेस बनाएं बिटवीन विद द कॉर्पोरेट सेक्टर, so at least we can tell you that this is the kind of skill and this is the kind of talent we are looking for in the corporate sector, because demand तो हमारे पास है
तो सप्लाई भी हमारे हिसाब से होनी चाहिए. So I think there's a lot more now that needs to be done through forums like these and by professionals like us to go and reach out to the educational institutions, especially the universities, जहाँ से हम डायरेक्टली लोगों को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, कि वो हमारे साथ बैठें और हमारी हमारी रिक्वायरमेंट को समझें और लोगों को उस तरह का स्किल दें जिसकी डिमांड है इन द कॉर्पोरेट सेक्टर राइट नाउ. सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस एक रेडिकल शिफ्ट की जरूरत है इंटरनली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर in really redesigning how you develop your own people, because it's a complete new world and generally companies are going to change and respond to the new normal in a very very unique and a different way. So there's a radical shift that is required in terms of developing our existing workforce, and I think that is where we need to sort of become cognizant of, and this is where we as HR we need to focus on. So, and Arif, I would like to build on it from where you have ended. Just building on this point, what you said, that there's going to be a drastic shift in how the organizations are currently working. So, जब उसकी हम बात करते हैं, तो currently if we see, we have a structural organization, and then we have organizations who are बेसिकली कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम गूगल की बात करें, जो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बोलते हैं आप, तो जो ये नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस थी, दे वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अपने मिलीनियल्स पे काम कर रही थी, काफ़ी टेक सेवी थी, और वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट वर्किंग पे ज़्यादा काम हो रही थी, वेयर एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी हैं, जहाँ पर हायरार्कियल जो जेडीज बनी हुई हैं, उनको अब हमें टोटली रीडिज़ाइन करना पड़ेगा टू फिट इन द सिचुएशंस. अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है, तो हमारे जो रोल है साइलोस में काम करना या स्पेशलिटीज़ पे काम करना, इस तरह के जो जेडीज हैं, अब हमें कोलैबोरेटिव वर्किंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और ऐसी नेटवर्किंग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी कर रही हैं. और ownership of the employee and measurement of the productivity and the trust level by the leadership, ये सारी चीजें जो हैं हमें दोबारा से रिक्रिएट करनी पड़ेंगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम tomorrow this thing happens again, we are equipped enough, and as each and every employee is able to contribute 100% to the organization. So yes, roles change होंगे, JDs change होंगी, job designs change होंगे, ये सब कुछ change होगा in the long run, what I can see. Okay. Let me welcome Mr. Shabazz Alibek. He just joined us. Hi, Shabazz. Hi, everyone. Hi. Hi. Could you please give a little introduction about yourself to the audience so that we know that who's here? Sure, I'll make it short and quick. Hi, everyone. Assalamu alaikum. This is Shabazz Ali Beg. My current role, I'm an HR and talent acquisition transformation leader for Amazon. I'm located actually in Florida, in United States. Obviously, have a lot of ties with Pakistan. I've led HR transformation in multiple organizations in Pakistan, like HPL and K Electric. But within United States, I've spent most of my career for a large global organization, which used to be a very big brand a few years ago, GE, General Electric. And since the last year and a half, I've been with Amazon. Sorry, I'm late. I was actually conducting a session on talent acquisition for EMEA and APAC for Amazon. So I apologize for being late. Okay. That's fine. Okay. I was saying, you were saying that the organizations will be, demand and supply will be with the organizations now. So jitna demand hai, they will be supplying should be according to that as well. So what do you think that organizations during COVID have given the pay cuts to the employees, and then is this the future of the organizations now, that they'll be hiring on the lower pay scales from now on, because there is a lot of there are a lot of people who are jobless, plus there's more talent available in the field now. So what do you think? What do you have to say? देखिए, मैं बड़ा optimistic हूँ about Pakistan. I believe the demand's going to come back. I think the sales are going to be, there will be a different kind of growth. It will be very, very fast and exponential.
So generally, job opportunities will be a lot more than they were pre-COVID. So I think the employment market's going to be improving, and I'm sure Shehbaz Saab will be able to further build on what I respond to, because I think the real value of talent, ये हमारा पाकिस्तान में थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव व्यू है रिवॉर्ड की तरफ और कॉम्पनसेशन की तरफ. अच्छे लोगों को दे आर प्राइसलेस, बिकॉज द वैल्यू दे क्रिएट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको प्रॉफिटेबिलिटी कहा जाता है, जो राइट टैलेंट होता है वो इतना ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करता है इदारे में कि द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पनसेशन बिकम्स इररेलेवेंट. मुझे लगता ये है कि जो एंसेलरी जॉब्स हैं, जो रूटीन जॉब्स हैं, आई एम श्योर मुस्तफा साहब भी इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं. हमारे पास बीओपीपी और बोपेट, ये हम फिल्म्स बनाते हैं प्लास्टिक्स की, वन ऑफ आवर डिविजन्स, एंड देयर ह्यूज प्लांट्स जो कि आप 3 लोग चलाते हैं. सो देयर इज मोर ऑटोमेशन. अब हमारा जो प्लांट ऑपरेटर है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, जो कि किसी जमाने में एक डिप्लोमा होल्डर हुआ करता था. सो आई थिंक जो आप सवाल कर रही हैं कि लोगों की तनख्वाहें, मुझे लगता है कि जो लोग अपने आप को रीस्किल नहीं करेंगे, अपस्किल नहीं करेंगे, वो रिडंडेंट हो जाएंगे, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी. कम की बात तो बाद में. और जो लोग अपने आप को रेलेवेंट कर लेंगे, उनके लिए सैलरी का कोई 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 क्वेश्चन नहीं होगा. दे विल बी रिवॉर्डेड एंड दे विल बी रिवॉर्डेड बेटर. बिकॉज देखिए, आपको तनख्वाह मिलती है कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने की, क्योंकि अब दुनिया और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ेगी तो कॉम्पनसेशन उसके साथ बढ़ेगा. तो जनरली आप पाकिस्तान में देखिएगा कि सैलरी जो हैं वो अगले 1 साल के अंदर, मुझे लगता है कि देयर विल बी a massive increase in the ceilings of jobs, and people will be paid more than they were paid even pre-COVID. So that's what my opinion is on salaries. So, Ji. I just I'll add to it. I actually 100% agree with Arif. Yes, I think it's a risky thing to say, oh, we're going to bring the salary down because we have more supply than demand right now for talent. I think I also agree with Arif. I'm very optimistic about things in Pakistan. I think they are going to come up very quickly, and I think you will see things getting even better, faster, and maybe there'll be a very good economic revival. Obviously, not all industries, not all roles will survive, but there will be new opportunities that will pop up. So rather than and so because I'm in the trenches in this, my thoughts on this is there are multiple ways of solving for it short term. There are organizations that are focusing more on providing internships. There are organizations that are providing more contract roles, so that, because I think the hesitation right now more than ever is that when you're talent acquisition, when you're in recruitment, right, you sometimes do some demand planning. You know where your business is going in the next 1 year, what the attrition looks like, what the demand and supply is, and then you can plan accordingly. Right now, it is so difficult to figure out what the next 6 months to 2 years looks like. So because of that, people are hesitant. So the a better way of solving is, as I said, provide more gig roles, contractors, temp hires, interns, student programs, and this way you can keep the lights on and wait till the right time when your things will pick up again. The other thing I will say is that these are also good times for HR and recruitment teams. I think Romana brought up a great time. This is a time to do some spring cleaning, right? Do some good hygiene. If things are slow, work on your job descriptions. If things are slow, work on your strategy, your processes, learn best practices, figure out better technologies that can be used for recruitment, so that when things pick up, and inshallah they will pick up very soon, that you are actually ready, set to go. Building on what Shehbaz said, that he made a very good point that gig workers and contractors, I can clearly see that market which was untapped in the country, like if I talk about diversity and if I talk about gender,
those females who got married and were not getting part-time jobs. I think this is going to spring up a lot. There are going to be people who will be working part-time for the organizations. So जहाँ पर आरिफ आपने बात की थी salaries की और जो question था कि salaries का, हाँ शायद designing of competent men is going to change in the long run. So we are going to, because the job itself are going to change, the agile working is going to be more, and the job in itself is going to change the shape. Contract workers होंगे, project jobs होंगी, तो इसलिए सैलरी का डिजाइन भी इसी तरह से, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन का डिजाइन भी इसी तरह से चेंज होता जाएगा. So yes, that is one very valid point which was raised by Shibaz के अब हम कौन से टैलेंट को कैटर करेंगे. और हम जब टैलेंट की बात करें तो ये वाला टैलेंट जो है जो कि फुल टाइम जॉब नहीं कर रहा था, ये शायद ज़्यादा इंक्रीज हो जाए. फुल टाइम जो लोग काम कर रहे थे वो शायद कम होने लग जाए इन दफा. I'll actually build on शहबाज साहब ने एक pertinent बात की है, और it's very जो spring cleaning की बात कर रहे थे वो, he's obviously sitting in a very mature market, and हम लोग पाकिस्तान में अभी भी HR में we're heading towards a maturation की stage में हम लोग. So generally this has given us a lot of time in Pakistan in the last 3-4 months to sort of look back and do processes a bit more scientifically. हम जब recruitment की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सिलेक्शन होती है कैंडिडेट्स की वो हंच पे होती है. आप गए इंटरव्यू देने के लिए, या आप इंटरव्यूअर को समझ में आए तो उसने आपको सेलेक्ट कर लिया. तो हमारा जो प्रोसेस है इट्स मोर डायग्नोस्टिक, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये बंदा ठीक है या ठीक नहीं है. हमें अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को प्रेडिक्टिव बनाना है in terms of actually designing such processes or bringing such tools in the whole recruitment cycle, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकें कि कौन सा बंदा इस जॉब के अंदर आके सक्सेसफुल होगा और कौन आके ही विल बी एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द जॉब. सो आई थिंक जो शहबाज साहब ने पॉइंट आउट किया, इस पूरे क्राइसिस में हमें बड़ा टाइम मिला है to sort of go back and look at how we do things and how can we do things differently also in terms of bringing very strategic value in our processes and make a more meaningful impact towards the organization. So I completely would like to reinforce that, and I'm sure as the discussion go forward we can get some value in terms of doing these processes more strategically by sharing experiences from markets like the US, and how can we get those practices in Pakistan. मेरा क्वेश्चन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा. आप बोले हिरा, आप बोले. जिस तरह अभी अली सर ने बात की है कि इंटर्नशिप्स की राइट नाउ, तो बिलाल से मुझे ये बताएं कि क्या फ्यूचर में इंटर्नशिप्स जो हैं फ्रूटफुल रहेंगी? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल, इंटर्नशिप फुलफिल रही हैं, और इन फ्यूचर में शायद ज़्यादा रोल बढ़ेगा. जिस तरह भी शहबाज उन्होंने बात की कि या रुमाना ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट आउट और सोर्सिंग और इस तरह का काम होगा. मेरे नज़दीक फ्रीलांस के ऊपर ज़्यादा पाकिस्तान में ग्रो हो रही है, और फ्रीलांस और फर्दर ग्रो होगा. और जो मुनीज़ा का पहला एक सवाल था कि हिंड्रेंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपनसेशन एंड बेनिफिट, चेंज आएगा और आ रहा है मार्केट में, और हुआ भी है. और अब ज़्यादातर स्किल्ड और फ्रीलांस जो कि जॉब मैच कर रहे होंगे या उस प्रोजेक्ट को मैच कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से उनकी वर्थ ज़्यादा होगी. तो आपका जो सवाल, इंटर्नशिप, डेफिनेटली इंटर्नशिप एक बेटर रिसोर्स है विद रिस्पेक्ट टू दी लिमिटेड बजट और रिसोर्सेज में, और टू यूज और मैक्सिमाइज आपका रिसोर्स यूज करने में. लेकिन जो पहले वाले सवाल और इस सवाल को मैं ये समझता हूँ कि फ्रीलांस का रोल जो है वो अब पाकिस्तान में इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेगी, और वो सिर्फ स्किल, टेक्निकल स्किल नहीं, वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स एरियाज को भी अब लोगों को अपग्रेड करना होगा. जो हमारे यहाँ कमी है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, शहबाज को ज़्यादा आइडिया की, और उसने भी देखा, और आरिफ ने भी, इन सब ने भी, कि दैट्स जो हमारे यहाँ यंगस्टर्स में या हमारे यूथ में लीडरशिप की या प्रॉब्लम सॉल्विंग या जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स में मैनेजिंग स्ट्रेस, ये चीज़ें अगर फ्रीलांस उसको मीट करके साथ साथ टेक्निकल को कर रहा होगा तो वो ज़रूर परमानेंट जॉब पर इम्पैक्ट करेगा. और ये अब होना शुरू हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशन और सोर्सिंग की तरफ ज़्यादा जा रही हैं इंस्टेड परमानेंट नेचर को प्रमोट करने में, तो वो कंपनसेशन पे इम्पैक्ट करेगा. यहाँ पर आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल के फॉर एग्जांपल, ये तो हम बात की दैट विल बी इनकॉर्पोरेटिंग जो इस यूनिवर्सिटी ग्रेड्स हैं या जो आ रहे हैं, हायर हो रहे हैं,
Lekin what about the people who are experienced? Because of this COVID, a lot of people, a lot of organizations did the layoffs within their organizations. So instability create over here within the organizations. The people who are at senior management level, for example, 10 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं, they wanted to go for an organization and they say in their own organizations कि अब यहाँ पर, we don't know, there's instability, we don't know when the business is coming in and हमें यहाँ पे retain रहना चाहिए नहीं. So what organizations are doing to retain that particular management level staff within the organization? So आप लोग की you can talk about your organizations and other organizations. What is your take on that? We start with the Arif Sensab, if you can, आई थिंक हमारा तो चैलेंज बहुत ज्यादा रहा बिकॉज वी आर एफएमसीजी. सो एफएमसीजी में तो बहुत ज्यादा हिलजुल रही है. और मैंने जैसे आपको कहा, मुझे तो ये लगता है कि जितना टाइम आप लोगों को लिंक्डइन पे दे दें उतने ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती हैं. सो जनरली हमारा as we in the last 2 months we've lost our key strategic talent to very good organizations. और एमएनसीज में भी पाकिस्तान में जो काफी अरसे से जो पोजीशंस उन्होंने फ्रीजर में रखी हुई थी, वो उन्होंने फिर कहा, डिसाइड किया कि चलो अब हमें टाइम मिला है तो वी आर आउट ऑफ फायर फाइटिंग, लेट्स जस्ट hire for these key roles. So I think I think people have networked, people have spent a lot of time getting to know each other on these webinars, and they've gone out and connected with people on LinkedIn. So I think हमें तो बड़ा रिटेंशन का, बल्कि हमने काफी सारी अपनी जो बेनिफिट पॉलिसीज हैं इंटरनली रिवाइज की हैं. हमने कार्स अपग्रेड करनी है अपने लोगों की. So just to actually set the tone on a very optimistic note, for our senior leadership team, we actually revised the whole car policy. We are looking at the benefit structure internally in our organization to make it more competitive. So I think overall organization like ours, especially in the FMCG sector, हमें काफी एफर्ट करनी होगी लोगों को रिटेन करने के लिए, जो कि अभी जैसे प्री सेशन बात हो रही थी कि आपको लोगों को पर्पस देना होगा, एम्पावरमेंट करनी होगी उनको, आपको automation, ये autonomy देनी पड़ेगी. You have to make their benefit structure more competitive to retain them. So I think at least हमारे सेक्टर में तो ये चैलेंज हमें आ रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को खुश रखें. We engage them, we keep them motivated and hooked on. So I think I think that's my view from the FMCG sector at least. जी बिलाल, what you have to say? इसमें एक चीज है कि एफएमसीजी पाकिस्तान में कोविड का जो इम्पैक्ट है एफएमसीजी पे या फार्मा पे उस तरह नहीं आया जो कि हैवी इंडस्ट्रीज पे काफी आया है या मोटर पे काफी आया है. हम सब ने देखा कि मोटर की सेल्स या ओवरऑल बिग इंडस्ट्री सेल्स काफी इम्पैक्ट की हैं. तो इशू ये भी हसन ने भी एक सवाल पूछा है. इशू जो मुझे फेस हुआ कि जो एक्सपीरियंस लोगों का कि इन बिटवीन अगर किसी की जॉब गई भी या उसको राइट साइज हो गया अनफॉर्चुनेटली इसमें, तो कुछ लोगों का माइंडसेट का भी मसला हमारे यहाँ एक ये है कि दैट वो फोकस करते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो दैट आई शुड कंटिन्यू माय जॉब एज वेल. दे डोंट थिंक कि यार मैं कोई दूसरा सेटअप करके भी या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आके भी, बेशक वो लिमिटेड रिसोर्स में हो लेकिन मैं उस तरफ आऊँ, वो सोच अभी भी नहीं है जो कि हमें कंसल्ट या मार्केट करने की जरूरत है, खासतौर पे एक्सपीरियंस लोगों में भी, क्योंकि वो एक फिनोमेना में चले आ रहे हैं कि नौकरी चल रही है, लेकिन ये जो एक अनसर्टेन सिचुएशंस आई हैं उसका उनको किसी को भी नहीं आइडिया था कि ऐसी सिचुएशन आएगी. तो काउंसलिंग की बड़ी जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की बड़ी जरूरत है, और इन फ्यूचर में जिस तरह हालात चेंज हो रहे हैं स्किल्स को अपग्रेड करने की भी साथ साथ बड़ी जरूरत है. आया वो एक्सपीरियंस्ड है या वो आया यंग यूथ है, तो दैट दे मस्ट नो कि इन 5 years अगर ये डिमांड आ रही है तो अपने आपको अपग्रेड रखना होगा, अदरवाइज वी विल बी आउट. सो दिस आर द एचआर रोल एज वेल, दिस आर द कंसल्टेंसी एकेडमिया और सोसाइटी का टू फोकस एंड टू कम्युनिकेट विद द नेशन एंड विद द जॉब मार्केट लोगों को कि दैट दे मस्ट हैव टू चेंज देयर माइंडसेट, और उनको अपना माइंडसेट चेंज करते हुए फ्यूचर डिमांड को मीट करना होगा. और अगर जरूरी नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप काम नहीं कर सकते, आप काम करें. मेरे पास कई एग्जांपल हैं, मैं नाम नहीं कर सकता, लेकिन जो पाकिस्तान में टॉप एफएमसीजीज के ऑनर्स हैं, उन्होंने अपना काम सिर्फ बिरयानी बेचने से शुरू किया, और राइट नाउ दे आर दी, शहबाज नोज वेरी वेल, एंड they started their career to sell biryani in 1988 1990, and right now he is the owner of the Pakistan top 2 FMCGs. They built the Pakistan leading brand, और वो फखर करते हैं. So the thing, अगर आपने ये बना लिया कि जी मैं क्यों बेचूंगा, और मेरे कई एग्जांपल है, मैं कई लोगों को कहता हूँ यार बिजनेस छोटे से शुरू कर दो, तो कहते हैं यार नहीं हम तो इतनी सीनियर जॉब से होते हुए हम कैसे, हाउ डू इज दैट.
ठीक है वो मसले आएंगे, हम एक्सपेंसेस के या अदर थिंग, लेकिन हमें चेंज के सिस्टम को एक्सेप्ट करना होगा, और अगर हम उसको फोकस होकर और दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये भी एक जो आपका सवाल था उसका ये उसमें है। So, Shabazz, what you have to say about it? Yeah, I think that this is probably the most important question, right? Because while there are a lot of people who are out of jobs, a lot of industries that are suffering, the problem is that it depends which industry you're in, right? There are industries that are thriving because of COVID-19. Anyone who's in cloud solutions or software industry, they are thriving. FMCGs, pharma industry, anything to do with medical devices, they're thriving. Because now it is all about necessities and needs of people. So if there are organizations where part of their core value is that they actually have low cost, high value type of products and services, they're actually doing well, and they will do even better. But some of the luxury industries, car industry is a good example, travel industry is another, that they are the ones who are going to be suffering. I think one of the things that I've sometimes I get in trouble, especially in Pakistan, because I'm an activist for employees. I think when we talk about salaries, and I've seen it particularly in Pakistan, in many organizations, is that we right away tell HR, do some salary adjustments and layoffs for employees, and sometimes you have to do it because there's no other choice. But what about the people at the top? If we can, there are the good companies with good leadership, they will actually take a hit themselves first, right? If we, the CEOs and the top leadership of the company, says, okay, we will take a salary cut, that will actually help the rest of the employees. So there are many ways of solving for these things in short term. I think the other thing that companies will have to do, and the good companies are doing, the example Bilal was giving, right? Someone who starts out by just selling biryani is making now so many different food products. Manufacturing, it's a total different paradigm shift. You have to diversify and really look at kind of a strategy right now. Hey, whatever we were doing, do we have to diversify in the next 3 years? And then what kind of talent do we need to diversify? Do we, do we continue with the people that we have, or maybe you actually need different type of talent to be able to diversify the portfolio of your company for the next 3 years. So I think while we have to kind of survive in the short term, the next 6 months to a year, but HR leaders and business leaders, they should look at what the next 3 years should look like and start planning now from a recruitment, from an HR, from a people perspective of how do we take our organizations to what it should look like in the next 3 years. I'll actually take a very quick. I'll take a very quick jab at this. I completely. I would say that I would also classify myself as an activist for employees. और मुझे को 18 साल हो गए पाकिस्तान में, बहुत सी ओकेजन्स में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो हमारे लीडरशिप टीम होती है, जो हमारे बोर्ड्स होते हैं, जो हमारी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाती है एम्प्लॉइज़ के साथ। और जो ये क्राइसिस था, ये क्राइसिस भी मोरालिटी, इसमें मोरालिटी भी टेस्ट हुई है इदारों की, जो कि बिलाल ने बहुत अप्रोप्रिएटली पॉइंट आउट किया है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था पाकिस्तान का, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने काफ़ी हिट ली है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, बट दीज आर वेरी लार्ज ग्रुप्स एंड दे हैव वेरी डीप पॉकेट्स and they have minted money here in Pakistan for a very, very long time. Or 2015, 16, 17 were very, very bumper year for profits for these large scale manufacturing companies. So businesses में कुछ दिन अच्छे होते हैं जिसमें पैसे बनते हैं, और कुछ दिन बुरे होते हैं जब आपके पैसे नहीं बनते हैं. So ऐसा नहीं होता कि आपके employees जो होते हैं, which are like your family, which are like your children, तो आपको ये लगता है कि आज मेरे पैसे नहीं बन रहे हैं तो मैं इनको I'll fire them and I'll probably save my own profitability
एंड प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ दीज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इनके जो ओनर्स हैं, जो इनके बोर्ड हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर 4 महीने प्रॉफिट्स नहीं बने इनके, बट आई एम श्योर एट द ग्रास रूट लेवल एम्प्लॉय को बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन वर टेस्टेड, and I'll tell you from a sustainability point of view, if you fail this test of morality, in the long run your organization will suffer and it will be remembered for what it and how it actually treated its employees during the last 4-5 months. तो जब चीजें बेहतर हो जाएंगी, जो एम्प्लॉइज निकाले गए और जो इनकी कॉर्पोरेट इमेज और ब्रांडिंग पे एक इम्पैक्ट आएगा, वो दिस विल बी फेल्ट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. So I think it is an opportunity for large scale manufacturing to sort of step up right now and take care of their employees. And I think I think जो शहबाज साहब ने कहा कि जैसे लीडरशिप का भी टेस्ट था कि जो आपके सीनियर लेवल पे लोग थे वो कहते हम तनख्वाह नहीं लेंगे, आप छोटे लेवल पे या जूनियर लेवल पे लोगों को ना निकालें, we'll probably take a hit. So I think it's very very appropriate, but I'm very happy कि अब LSM जो आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है पॉजिटिवली. Great answer. If I go on the points which all of you have touched upon, I'll just give a brief on my organization because it's a pharmaceutical and crop science. So yes, there has not been a lot of layoffs. There haven't been any layoffs as such because the direction, when you talk about the value, is going to be gauged from what of the organization is going to be gauged from what has happened in this COVID time. So we were very conscious of not laying off any people. And when it comes to senior positions or people, so there hasn't been much attrition because of the industry which we belong to also. But just to add on one point to whatever everyone has said, that HR how can HR in the long run work upon the experience which we have gained in this time is transformational organizations होंगी कल को, और डिजिटलाइजेशन की तरफ भी हम बहुत तेजी से जा रहे हैं. तो आई थिंक रिवर्स मेंटोरिंग इज समथिंग जो बहुत काम आएगी, क्योंकि all these senior people who are working with us, along with what we are also in that group now, our experiences are there and are recognized by the organizations. But जैसे skill set change होगा, तो इस स्किल सेट के लिए आई थिंक रिवर्स मेंटोरिंग की भी जरूरत होगी, जहां पर हमारे मिलेनियल्स जो हैं दे कैन ब्रिंग इन a lot of tech info and technology driven organizations. So that information can be built in the skills of the people who are already in the organization. So that is something I think we can also look into in the long run from an HR point of view. Here is anything that you want to add on? You want to ask anything? Here आप mute पर हैं. You're mute पे हैं. थैंक यू. जिस तरह अली सर ने सर बिलाल और मिस रुमाना ने इसमें ये चीज़ एडअप की है कि इंटर्नशिप्स होनी चाहिए ताकि फॉर द फ्यूचर सेफ के लिए, क्योंकि अभी हम लोग अनसर्टन थे कोविड की तरफ से. हम लोगों को हमारे माइंड ये चीज़ नहीं थी कि कोविड में होगा तो हम लोग मतलब काफ़ी लोग ले ऑफ हो जाएंगे, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हैं चाहे उनका एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे न्यूली मेरे जैसे बिल्कुल जो न्यूली फ्रेश हैं जो अभी मतलब स्टडीज़ करके निकले हैं. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि टीम वर्क होना चाहिए. एक तो जिस तरह मिस्टर रुमाना ने कहा कि ई लर्निंग की तरफ से ज़्यादा फोकस करना चाहिए. एंड सेकेंड वन ये कि ट्रस्ट बिल्ड जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इस कोविड का इससे बड़ी भी अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन आए तो हम लोग उससे फाइट नहीं कर सकते. तो सबसे ये है कि हमें पेन लेना चाहिए. जब तक हम लोग पेन नहीं लेंगे किसी चीज़ का या एम्प्लॉइज़ का पेन नहीं लेंगे तब तक हम लोग फ्यूचर में भी इस चीज़ को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकेंगे. तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें पेन लेना चाहिए और सबसे बड़ी टीम वर्क एंड देन ट्रस्ट. तो आपने बात की इंटर्नशिप की. लकीली आई हैव सीन इवन इन माय ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हैव बीन मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई हैव सीन दैट इन दिस कोविड टाइम internship did take place. We did recruit a lot of people from different organizations for internship. लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंस क्या फील हुआ? हमें मैनेजमेंट को और लोगों को इंगेज करने के लिए जिनके साथ बाय इन हमें चाहिए था, मैनेजर्स का बड़ा
कॉन्क्रीट प्लान था कि हमने इस इंटर्नशिप को कैसे लेके चलना है, 1-to-1 मैनेजर्स के साथ और जिस टीम्स के साथ ये लोग काम कर रहे हैं उनका ऑनबोर्डिंग बड़ी प्रॉपर हुई और मैनेजर्स को हमने इंगेज बहुत स्केड्यूल करके किया और उनको प्रॉपर इंटर्न्स को टाइम दिया गया. Yes, the design was entirely different than what was happening before. और मुझे लगता है कि previously शायद उनको इतना attention भी नहीं मिल रही होती थी. वो आते थे, उनको एक JD पकड़ा दी जाती थी, उनको profile पकड़ा दिया जाता था, उनको बोलते थे कि आपने ये काम करना है and you go around and meet people and try to work it. लेकिन मुझे लगा कि इसमें हमने literally we had to put a lot of effort to make this internship work for the organization. And yes, there have been other organizations in this COVID time who have taken advantage of internship and engaged this talent from the institutes. So what are the future goals for the talent acquisition function in the organizations, in your organizations, and what you see in your fraternity? What will from 3 years onwards, what do you think is the goals, will be the goals of the organizations for this particular function, especially? Ji, Shabazz, could you please add Sure, on? हो सकता है कि मेरे दायरे के goals थोड़े different हों, being abroad, but I think these are things that I'm passionate about even when I was in Pakistan, so nothing has changed for me. I think where I am, a big goal for talent acquisition is to constantly focus on diversity, right? Making sure that even during COVID-19 pandemic situation that we have more females that are getting opportunities, both during interviews. We also make sure that minorities have, more opportunities. In fact, right now, depending on the country and the geography, sometimes it's the minority, sometimes it's the female population that is even more impacted economically. So those are the kind of areas that we are focused on. Again, to Romana's point and to Hira's point, if we don't have like full-time employee job opportunities right now, because sometimes we create jobs because of attrition. Just Arif ne kaha, there's always like some percentage of people who are always leaving your organization, moving from one place to another. Right now, majority of the organizations don't have attrition. Agar kisi ko koi kursi mili hui hai, to wo wahan baitha hua hai, they don't want to move, right? So that is where we are trying to bring in more interns, those kind of contract roles, but focus on diversity. But then also in the long term, we're looking at the way we are doing things will not be the right way of doing it going forward, right? So as I said in the beginning, this is where we're now trying to look at like strategies, looking at how do we use more technology, automation to do a lot of things like Arif said, really predictive recruitment. ठीक है ना, तो जो काम मतलब 10 लोग कर रहे हैं, क्या can we do more with the same number of people? So I think those are the two areas where these are big opportunities and challenges at the same time, and that's keeping me busy 24/7 these days. Ji, Arif? मैं तो ये सोचता हूँ कि ये मैं 18 साल से सोच रहा हूँ. आई थिंक एंड आई एम गोना बी एस्पायरिंग कि अगले 3 साल में शायद ये अचीव हो जाए कि जब किसी एम्प्लॉय को मैं हायर करूंगा, वो पहले दिन आए तो मुझे बोले कि दिस वाज द जॉब दैट वाज कस्टमाइज्ड फॉर मी. Oh, I love that idea. कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी टेक्निक हो कि इतना परफेक्ट जॉब फिट निकल आए कि वो बंदा बोले कि मैं तो बना ही इस जॉब के लिए था और मुझे आपने ऐसा, दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वांटेड टू वर्क फॉर. सो आई थिंक और दिल से बोले, right Arif, मतलब छोड़े ना, मतलब दिल से बोले, that's important. Employee will be the happiest person on earth. मैं इसमें मैं इसमें चीज कहूंगा कि जब आप कैंडिडेट को असेस करते हैं तो बेसिकली आप उसकी पहले पर्सनालिटी को असेस करें, उसके हार्ट को असेस करें, फिर उसके ब्रेन को असेस करें इन टर्म्स ऑफ हिज आईक्यू एंड देन गो टुवर्ड्स हिज स्किल. पाकिस्तान में ये साइकिल बिल्कुल रिवर्स है. वो पहले आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं, अच्छा क्या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है,
वहां पर आपने अचीवमेंट्स क्या की, तो प्रैक्टिकली दे आर असेसिंग योर स्किल सेट, नॉट योर पर्सनैलिटी, नॉट योर IQ। सो इस वजह से जो परफेक्ट जॉब फिट नहीं मिलता हमें। So I think the overall aspiration for us here at Smile Industries and for me as the head of HR for the company is to make sure कि going forward अगले 3 साल में हम जिस तरह के लोग हमें चाहिए वो हमें एग्जैक्ट परफेक्ट फिट मिले, हमारी ऑर्गेनाइजेशन रेडी हो for the growth that we are expecting hopefully in the next couple of years, 3 years। तो this is what we are aspiring। जैसे शहबाज साहब ने कहा कि जी डाइवर्सिटी, विमेन इंक्लूजन, डिसेबिलिटी वाले लोग, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, माइनॉरिटीज, हम बहुत ज्यादा फोकस है उसकी तरफ, क्योंकि आपको वी हैव टू लुक आफ्टर दिस सेगमेंट स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। एंड व्हेन योर कंपनी इज डूइंग वेल, यू बिलीव कि इनका भी हिस्सा है आपकी सक्सेस के अंदर। So I think that is where we are focusing a lot, and we've made baby steps, but we are making big strides now। So I'm sure कि ये हमारी challenges हैं और यही हमारा ये विजन है कि अच्छे लोग आए और अच्छा काम करें कंपनी में। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा आरिफी की बात को, कि हम बात तो कर रहे हैं ना कि हमें माइंडसेट एम्प्लॉइज का चेंज करने की जरूरत है, या यूथ के ऊपर काम करना है, या स्किल सेट है। लेकिन मेरे नजदीक एक एरिया एम्प्लॉयर साइड का भी माइंडसेट को भी सेट करने की बहुत जरूरत है पाकिस्तान के बिजनेस पर्सपेक्टिव में। जो उन्होंने बात की आरिफ ने, कि हमारे यहाँ टैलेंट एक्विजिशन प्रैक्टिसेस जरा डिफरेंट ही होती हैं, नॉट थॉरली। मैं MNCs की बात नहीं कर रहा, या मैं बहुत वेल स्टैब्लिश्ड HR की बात नहीं कर रहा, और मैं उस HR की बात कर रहा हूँ, या मैं उस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो 98-97% पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो वी नीड टू improve the mindset of the employer or the management side, कि that they should have to accept or follow the future demand and need। यानी जो हमें skills चाहिए, जो right skills चाहिए, competencies चाहिए, और जो practices चाहिए HR की, वो हमें implement करने की जरूरत है। Instead कि वो प्रैक्टिसेस जो कि ट्रेडिशनल चली आ रही थी और जिसकी बेस पे हम टैलेंट हंट कर रहे थे, तो उसमें हम कई अच्छे टैलेंट्स को वेस्ट भी कर देते हैं, ज़ाया भी कर देते हैं, जो कि इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हिट करता है। तो इस बात के साथ कि टैलेंट के क्या चैलेंजेस हैं, उसमें एक चैलेंज ये भी है कि दैट वी नीड टू सेट द माइंडसेट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयर ऑफ द पाकिस्तान to accept, to adopt right HRM practices in talent acquisition. Yes, Romana. Yeah, listening to all these points, I go back to the question which you said, what changes I'm seeing in my organization. I think एक तो हमारा उस तरफ mindset already था that we are going to work a lot on talent acquisition में जो है everything is going to be automated, and that is something which the organization, my organization, and I know the other organization will be looking into, that there's going to be a lot of automation which is going to take place। And बहुत मजे की बात की आरिफ ने कि जो I'll go back to what I said earlier कि right fit, right job profile, और मुझे लगता है कि in the long run ये होगा। Reason being कि if you remember when we were studying, there was a doctor and there was an engineer and there was arts। So उसके बाद even if you look at the millennials or the kids at our homes, we even if we drive them to those 2-3 specific jobs, ऐसा नहीं होगा। अब there is going to be, especially disruptive time के बाद, जैसे हम बात करें कि शायद फुल टाइम एम्प्लॉइज भी नहीं हो और वी हैव अ लॉट ऑफ एजाइल वर्किंग और प्रोजेक्ट वर्किंग हो, तो जॉब्स रीडिजाइन डेफिनेटली होंगी। तो जब जॉब्स रीडिजाइन होंगी तो आई एम श्योर देयर आर गोइंग टू बी मोर, वी माइट एंड अप विद व्हाट आरिफ सेड दैट जिस तरह की जॉब्स डिजाइन और जिस तरह की रिक्वायरमेंट अब इंडस्ट्री में लोगों की होगी, शायद हम वी रीच टू दैट पॉइंट वेयर द एम्प्लॉय व्हेन ही इज गोइंग टू कम and he's going to say, wow, this is exactly the job which I was looking for, and maybe that with the perks and benefits jo usko mil rahe hain, they are different, and even maybe he's not a full-time employee but he's doing that project and he's very happy and engaged। जैसे मैंने पहले बात की, networking organizations जो होती हैं उसमें जो project में लोग include होते हैं, कि एम्प्लॉइज इंक्लूड होते हैं, वो टाइम पीरियड के लिए होते हैं एंड दे टेक फुल ओनरशिप टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। तो शायद लॉन्ग टर्म डिजाइनिंग ऑफ द जॉब्स इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स दैट।
Okay. Okay. So these are the questions for now. Is there anything that you want to add which is not being discussed in this session? मिस मनीषा, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है जो आपने अभी क्वेश्चन किया था, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखती हैं फ्यूचर में? मुझे आप ये बताइए थोड़ा सा इस पे। I think her screen is frozen Yeah. unless it's mine. Shehbaz, आप थोड़ा सा अपने इन challenges with respect to the US point of view, if you had something, ठीक है, it's a modern world, but what the core challenges do you see in the US, not only in the IT side, but the other industries, the unemployment rate, या with respect to the other things, कुछ highlight उस पे, क्योंकि पाकिस्तान का HRM जरा different perspective है, industrial environment different है, तो थोड़ा आप अपना कुछ थोड़ा उसमें ऐड करना चाहेंगे, कुछ बताएंगे ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें जब तक वो नीजा ज्वाइन करती हैं। Yeah. No, Bilal, good point. I think the interesting thing is when when you look at some of the multinationals and large manufacturing in Pakistan, their sort of thought processes are very similar to what you see in America or Europe. Uh, but I think I'll focus more on the small businesses, right? Jo those are the ones that have to figure out what needs to be done. Jahan pe, the decision making is more like based on gut feeling or based on what the boss says, right? Seth saab ne jo kaha wohi chalta hai yahan. I think that is going to that should change. I think the other thing that is I think applicable in states and everywhere else and in Pakistan now is something jo log don't think about, which is contingency planning. ठीक है? Because this is probably the first time where the whole world is suffering the same pain, right? Sometimes there are crises that are impacting emerging markets or they are impacting certain geographies. 2008 there was an economic crisis, but it impacted US, Europe, UAE, but it didn't impact Pakistan, for example. But this is the first time everyone is impacted. So I think maybe one of the things that are changing in companies here is that they are realizing that, oh my gosh, we have to spend more focus on contingency planning going forward because we will have these kind of crisis come up again, and how are we going to deal with it? And I think wo jo hota hai na ki haan ji Allah malik hai, let's just keep on going. I think that mindset is going to change. I think it should change in Pakistan also. I think I was in another webinar recently where the question was, should we kind of think कि सब ठीक है or just relax, or should we have sense of urgency? And my answer was we should have sense of urgency and a little bit of panic. Even though I'm very optimistic, I think things are going to go back to normal, and particularly Pakistan will revive even faster than other countries. But at the same time, if we just kind of wait and say, okay, nahi ji, let's just wait and things will be okay, then we will worry. And right now we just kind of sit and do nothing. I think that's the bad thing to do. So if people have time, if they have jobs, then they got to do their level best to maximize what they can to be able to survive. If they don't have a job because of COVID-19, they got laid off, this is the time to actually make sure, to Hira's point, learn new skills, take some e-learning, but also think outside the box when you're looking for a job. Because while maybe my industry where I am is suffering, there are other industries where actually booming because of COVID-19. So I know there are a lot of people who, for example, have done their MBAs, are right now taking some sort of a certification or degree in pharma so that they know that pharma will do well in the next few years. So I think right now everyone has to be a bit more agile and think of different ways to survive in the short term. And I think companies have to do the same. And especially the same message for Pakistan that we need to change the mindsets, the overall with respect to the future need.
I think right now is a good time to say this should, if because we have that kind of the corruption and all of those kind of negative things. This crisis should actually eliminate that, hopefully, because I think now it should really be about, even when you're hiring people, yes, find out what their values are, find out what their mindset is, their culture is, and then determine if they are going to be the right person. Do they have the right skills? Because I can always train people on skills. The challenging part is to change people's mindset, right? And I think right now more than ever, top down, all of us have to rethink of how we operate. Um, Also, on the cost standpoint, we have to really make sure that we cut down. I think a lot of companies, a lot of people should individually do the same thing. But I think at the same time, that is the number one thing that has to be changed. And that is the most difficult thing, which is to change people's mindset. But I think this is the high time that leaders of the organizations change their mindset. I'll actually build. I'll build on to Please. what Shabazz said. Is the fact कि वो कहते हैं ना, जब when you're not planning, you're planning to fail. So Yeah. पाकिस्तान में हमारा एक फुकदान हमेशा रहा है कि हम प्लानिंग बहुत कम करते हैं, because obviously हम ज़्यादातर एक फायर फाइटिंग मोड के अंदर होते हैं. So obviously this is a very good time to sort of plan for the future. Sit back and sort of analyze and assess and put what your future goals are on a personal level and at an organizational level also. So preparedness and planning की बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें ज़रूरत है, और इस पे हमें फोकस करना चाहिए. God has somehow been kind on us. He's I think हमारा collateral जो है पाकिस्तान में has not been as high as it has been in the US. So I think we should be grateful and thankful to the mighty power ke, they've not been as hard on us, but it has also given us an opportunity कि हम अपनी तैयारी करें फ्यूचर के लिए, हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें. इसमें एक प्रॉब्लम जो मुझे आता है, एंड देन आई विल आस्क टू ऑल, और मैं थोड़ा अपना भी एक्सप्लेन करूंगा कि व्हेन आई इंटरव्यू द कैंडिडेट्स विद रिस्पेक्ट टू द टैलेंट हंट, तो उस बच्चे में मैं देखता हूँ कि उसमें स्किल्स किसी और प्रोफेशन में अगर वो होता तो बहुत ज्यादा बेहतर होती, लेकिन वो किसी के कहने पे, किसी की डायरेक्शन पे, पाकिस्तान में जो पर्सनल प्लानिंग या विजन सेटिंग होती है ज्यादातर, जो मैंने अभी तक देखा और मैंने कुछ रिसर्च भी की इसके ऊपर, तो वो अपने बड़ों से या किसी से एडमायर होकर उस फील्ड को ऑप्ट कर लेते हैं और उनकी पर्सनल कॉम्पिटेंसी उससे मैच नहीं करती. मैं कई ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया और वो जाना चाहते थे, कोई इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन परसेंटेज ना होने की वजह से वालिद साहब ने कहा कि जी किसी तरीके से इस इंस्टीट्यूट का थप्पा लग जाए तो फूड टेक्नोलॉजी कर लो, जबकि उसको वो फूड टेक्नोलॉजी में ना उसका स्कोप है, ना जो भी उसकी ना उसका इंटरेस्ट है. So how do you see this? How can we teach or guide academia and the student and youth from the industrial perspective, from the HR point of view, कि भाई आने वाले दिनों में जो हम बात कर रहे हैं, शहबाज, आरिफ, रोमाना और बाकी सब, कि ये असल नीड है या ये यूथ की कि आपकी कॉम्पिटेंसी इस चीज से मैच करती है और आप ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं या प्रोडक्टिव हो सकते हैं फॉर अस, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो बात की कि ये मेरे लिए ड्रीम जॉब है या मेरे लिए कस्टमाइज है. So how can we reduce this gap with respect to the industry and the academia and the youth? So we start from Romana and then फिर आरिफ और फिर शहबाज और मुनीजा and then फिर हम आगे बढ़ते हैं. आपकी सजेशन क्या है और आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह होना चाहिए, and what do you suggest to the society or do the parents as well? I think as an organization, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही होती है. तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में करियर फेयर्स होते हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूट के लोग, हमारे जैसे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जाते हैं, and they talk to the students over there and guide them on what capabilities and skills will be required for what jobs. So I think इसको employer branding, वैसे तो हम अपनी employer branding के लिए जा रहे थे, लेकिन I think कॉन्शियसली इंडस्ट्री इस पे काम कर सकती है कि जो ये करियर फेयर्स होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, उधर जाकर
स्टूडेंट्स को अवेयर करें कि कौन कौन सी पॉसिबल जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में और उनके लिए क्या स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज चाहिए होंगी और क्या फ्यूचर उनको नज़र आना चाहिए उसमें. सो अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं इंक्रीज करनी चाहिए. दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू गेज द टैलेंट. उनको गाइडेंस भी मिल जाएगी. अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एज ग्रुप के पेरेंट्स हैं हमारा, क्योंकि वी आर इनटू इंडस्ट्रीज ऑलरेडी, तो हमारा या तो हमारा बैकग्राउंड हमें गाइड करेगा कि व्हाट वी आर डूइंग, एंड जिस जो हमारा विजन है अपनी कॉर्पोरेट का वो हमें गाइड करेगा कि ये पोजीशंस हैं. बच्चों को हमी से गाइडेंस मिल रही होती है. सो consciously corporates going into these institutes and helping them out, creating awareness regarding different jobs is one thing which can help them make up their minds. Great. GRF, आपका input, how to handle this issue as well? आई थिंक मैंने जब शुरू किया था तो मेरा तो बड़ा गिला रहा है ये हमेशा एकेडेमिया से पाकिस्तान में कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जो है ना कोलैबोरेशन करें, आप कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व करें राइट फ्रॉम द करिकुलम डेवलपमेंट टू इवन डिलीवरी ऑफ नॉलेज. सो आई एम श्योर कि जैसे रोमाना एक क्लास में खड़े होकर पढ़ा सकती हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, शहबाज पढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई एकेडमिक उतना लिंकेज क्रिएट नहीं कर सकता विद रियल लाइफ एक्सपीरियंस. तो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एलिमेंट जो हमारे प्रोफेशनल्स के पास होता है, वी कैन ब्रिंग दैट फ्लेवर टू द होल टीचिंग पेडिगोजी इन द यूनिवर्सिटीज. तो एक तो उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दूसरा जो आप हिरा भी बार बार पूछती रही इंटर्नशिप का, और ये यू नो सो व्हेन यू ब्रिंग पीपल एज इंटर्न्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उनको अंदाजा होता है कि वो किस तरह की इदारे में है. और ऑब्वियसली अगर आप अपने 4 साल के ग्रेजुएशन में आप 4 से 5 इंटर्नशिप्स करते हैं तो 4-5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाके देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर. सो एक आपको वो भी एक फ्लेवर मिलता है. नंबर 3 मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी जनरेशन है, ये जो मिलेनियल्स हैं, ये जो नई जनरेशन है, ये हमसे बहुत ज़्यादा अवेयर है. So they are more cognizant and they are more aware of what they are looking for. So मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं बार ये रिपीट करता हूँ कि हमारा टैलेंट एक्विजिशन में एक बड़ा चैलेंज ये आने वाला है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे होंगे. हमें अच्छे ग्रेजुएट टैलेंट नहीं मिल रहा होगा हमारी कंपनीज में काम करने के लिए. सो आई थिंक एज वी गो फॉरवर्ड, कंपनीज को ये अपना मेथड, अपना तरीकेकार और प्रोसेस इस तरह का बनाना है कि परफेक्ट जॉब मैचेस हों, ताकि अच्छे जो लोग आ रहे हों वो बिल्कुल परफेक्ट फिट हों जॉब के अंदर. सो आई थिंक दीज आर द फ्यू एरियाज दैट वी नीड टू फोकस, ताकि लोग सही करियर में लगें. और कभी कभी ये होता है कि आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेते हैं, उसको गलत फंक्शन में डाल देते हैं, उस बेचारे की लाइफ वहीं से शुरू होती है और उसी सेक्टर में, उसी फंक्शनल एरिया में खत्म हो जाती है. सो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी ये डिपेंडेंट है कि जब उनको पता लग जाए एट एन अर्ली स्टेज कि ये आपका ये दिस पर्सन इज नॉट फिट फॉर दैट रोल, तो उसको उस रोल में आनी ना दें. मेक श्योर वी फाइंड द राइट फिट. Yeah, I think I'll just yeah, some highlights about you. I'll quickly add to it. I think this is an excellent question, Bilal. I think the first thing first, I think every organization, and within the organization, every team or function has its own culture. So when I'm hiring, whether I was hiring in the past or I'm hiring now, I look at first whether this person will be the right fit for this culture. Some cultures are very conservative, some are very progressive. It is what it is, but I want to make sure that the person will fit for right now. For example, Amazon has a very distinct culture. So whether this person will fit in that culture. Once I've figured that out, then I'm looking at 3 things to determine, are they the right fit for that specific job? To your point, people have all kind of degrees based on, someone said that to them. So I'm looking at 3 things. Number 1, do they get this job? Do they actually understand what it takes for that job, whether it's engineering or HR or something else? The second is, in my assessment, in my interviews, in my evaluation, is that person really passionate about this job, or is it just, naukri hai? For me, that is very important. And third, do they have the mental, the physical, the emotional capacity
to deal with the challenges of that job. Some jobs are simple and they have a smaller scope. Some jobs are too complex. कुछ jobs हैं जिसमें आपका 9 to 5 नहीं है. It's 24/7. So there are certain people who can thrive in that kind of a challenge, and then there are others who are like, nahi bhai, ye hamare liye nahi chalega. So I look at people, I measure their skills based on those three things, and then make sure that we get the right people, which is fair to them, and then also fair to the organization. ग्रेट इनपुट। मुनीजा, आप ऐसा फिर आप इसको होस्ट करिएगा, लेकिन सवाल मैंने पूछा था, व्हाट योर फीडबैक अबाउट माय दिस क्वेश्चन के हाउ कैन वी ओवरकम दिस ओवरऑल दिस चैलेंज रिस्पेक्ट टू द एकेडमिया, रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री जो उसकी डिमांड है, एकेडमिया और स्टूडेंट्स जो यूथ आ रही है? Actually, students, I'm also working as a freelancer for Secular.pk. So this is they provide career counseling to the candidates who doesn't know that कि उनको future कहाँ जाना चाहिए. So जहाँ तक academia की organizations का ताल्लुक है, yes, we as organization we are looking for the right fit for the right job, but कुछ students at academic level, most of the students doesn't know कि उनको future किस तरफ जाना है. They, for example, if some students are doing MBA, they maybe at the end of the day उनको कर तो वो लेते हैं, लेकिन they are not sure about that if we are doing it, are we doing it, are we really passionate about it, like Shabazz said. No. So uske liye counseling is the most important thing, that at the academic level and at the organizational level it's also important. Organizations, maybe you can put in that function, the counseling function for the employees who are there, so that maybe they are not fit for one function, maybe they'll perform well in the other function. So counseling at both levels, either at the academic level or at the organization level, is important part, an important factor to overcome this challenge. So again, my question is, where do you see कि major core responsibility शहबाज किसकी आती है, academia or the parent side that will have to focus so that they can provide the right skill or right human resource to the industry? All of the above. Instead के वो जब all of the above. I think I've worked with CBS and a few other places. I've done some teaching in those universities in Pakistan. I'll tell you, my biggest disappointment is, I agree with Arif and Romana on this, is that it's kind of like a factory. You're just actually having bodies and numbers just going through your university and getting X number of people, with a degree, but they're not teaching lot of these things which are taught through assessments and counseling, as Muniza said. So I think, one, I don't want to be dependent on them, but I hope that the universities can do a better job. The parents have to do as best as they can. Some are better than others in this regard, but I think also the corporate sector, people like us, the Mustafa's forum here, I think those who are listening can probably take one inspiration from this and figure out what they are truly passionate about, rather than doing something because their chacha was doing it a few years ago. जी रोमाना। मैं तो I agree what Shehbaz was saying कि what they are passionate about, और मुझे लगा कि when I did career counseling for some of the institutes, तो there when you go dig in deep and ask them questions, they really do come up with कि जी मैंने internship इसमें की थी और मेरा ये plan था कि मैं आगे sales में ही जाऊँगा, and there and then you recognize as an HR person कि इसकी capabilities क्या हैं, आप उसको वहाँ पर गाइडेंस दे सकते हो। और मुझे लगता है कि there have been times when I was able to convince the people that focus on the capabilities they have and find a job which is relevant to those capabilities, rather than having a set mindset कि जी मुझे यही करना है। एक इंजीनियरिंग का लड़का था and he wanted to, and उसकी सारी capabilities और उसकी social skills जो थी वो he could have been a great salesperson. So I just identified the capabilities he had and I told him to look into the right position for yourself in the, और उस right position के लिए corporates can play a role by educating these institutes about what is out there for these students. जी आरिफ आप प्लीज, एंड देन फिर मुनीजा, और फिर आप मुनीजा आप इसको टेक अप कर लीजिएगा। I think Shehbaz and Romana have I think they've actually summarized it really well. और I think जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब जो हमारे जो यूथ है और हमारे जो ये नई जनरेशन है,
they're very, very self-aware. So, or obviously with the influx of information at their fingertips, they have a lot. There's a lot of information available to them also. So anybody who's very hooked on and who's really, really motivated and who's really interested in taking his career and control of his life, he can very easily find his way. So I think I think it's much easier for people and different today than it was for us. जी मुनीजा, हम इसको एंड की तरफ हैं, तो प्लीज आप इसको क्लोजिंग और जो भी है, गुलाम मुस्तफा। अगर आप लोग जी, मुझे 2 मिनट इजाजत दें। जी प्लीज। जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया, बड़ी वंडरफुल डिस्कशन हुई और द क्लोजिंग पार्ट व्हिच आई अटेंडेड इज एक्सीलेंट। आई एम रियली वेरी सॉरी कि ड्यू टू सम इमरजेंसी आई एम अनएबल टू जॉइन यू गाइस फॉर द होल सेशन। लेकिन आई कुड फील कि मैं बीच में आप लोगों को देख रहा था एट बैक स्टेज एंड बड़ा अच्छा आप लोगों ने इनपुट दिया। आई एम थैंकफुल टू ऑल द पैनल मेंबर्स, स्पेशली शहबाज साहब क्योंकि 9 आवर्स का टाइम डिफरेंस है एंड हमेशा बड़े फ्रेश नजर आते हैं हमें। हम लोग इतने टाइम डिफरेंस के साथ उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो बाकी आरिफ साहब, रुमाना एंड मुस्तफ़ा बिलाल साहब, स्पेशली मुनीज़ा हमारी मॉडरेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत अच्छा आज आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा, बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही। तो टाइम तो जितनी अच्छी डिस्कशन चल रही थी, टाइम आई थिंक थोड़ा कम है, लेकिन इंशाल्लाह अगर हमने सारी बातें आज कर ली तो फिर बाकी वेबिनार्स हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे यहाँ से आप सब इसमें मैं लोगों एक का चीज ऐड शुक्रिया अदा करूंगा करते हैं और सेशन गुलाम, एक चीज से कंक्लूड हुआ कि इस फोरम के थ्रू आप ड्राइव करें कि अब फ्यूचर नीड और स्किल्स अब हमें पाकिस्तानी यूथ को विद रिस्पेक्ट टू द राइट टैलेंट हंट के लिए हमें क्या स्किल्स चाहिए, एंड आई थिंक योर फोरम कैन लीड दिस एंड वो काफी इंट्रोड्यूस करा सकता है एकेडमिया, यूथ और इंडस्ट्री को इस सिलसिले में। जी इंशाल्लाह। जी एक्चुअली मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जिस तरह शहबाज साहब ने कहा, ऑल्दो के सब लोगों को काम करने की जरूरत है, लेकिन जो सबसे मेन रोल है ना वो स्टूडेंट का है। मुझे याद है कि आजकल तो एकेडेमिया बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशंस भी सपोर्ट करती हैं, और जिस वक्त में हम लोग पढ़े थे, आज से अगर 10-15 साल पीछे चला जाए तो उस वक्त चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अगर स्टूडेंट खुद से रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना अपने करियर के लिए, खुद से एफर्ट्स नहीं कर रहा, तो मेरे यहाँ से एकेडेमिया और जो हैं बाकी सब लोग फेल हो जाएंगे अगर वो खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। और एंड आई कैन फील फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज चूंकि टॉपिक है फ्यूचर ऑफ टैलेंट एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं जो देखता हूँ, हम लोग HR लेजेंड्स में हम लोग करियर प्लेसमेंट सर्विसेज भी देते हैं, तो उसमें हम लोग एम्प्लॉयर्स को हमने कैंडिडेट्स प्रोवाइड करने होते हैं, हमने हेडहंटिंग सर्विसेज देनी होती है, बट व्हेन इट कम कैंडिडेट्स, सो वी बिकम फेल टू फाइंड राइट कैंडिडेट्स फॉर पोजीशन। और उसमें मोस्टली जो हमें इश्यूज आते हैं वो कैंडिडेट का एटीट्यूड होता है। People are not willing to go for interview, people are not appearing for interviews on time, and people are disappearing from interviews. They are not showing up without any kind of information, and when we are calling them, they are not taking it seriously, and I don't know where is चलिए जी, on that note, मुझे इजाजत दें, sorry I have to run to something else. प्लीज, हमें It भी was रन करना है। great meeting you all, great seeing you Bilal once more. All right, thanks everyone. Allah Hafiz. Allah Bye now. Hafiz। Allah Hafiz. थैंक यू आरिफ, थैंक यू रुमाना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। Thank थैंक यू, you. अस्सलाम वालेकुम। Allah Hafiz. Allah Hafiz, Allah Hafiz। चलो।